Hi guys, welcome to my channel TheGroovyPants. I am Shrishti and today I am back with my chef mode on और आज मैं आपको सिखाऊंगी chili butter garlic prawns with vegetable brown fried rice. But before getting into the video, make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon below. So let's get started. So chili butter garlic prawns बनाने के लिए हम लेंगे prawns और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा salt for seasoning और मैरिनेशन में कैन से पेपर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस और हम इसे अच्छे से मिक्स करें। अब मैं पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा बटर। अब इसमें मैं डालूंगी गार्लिक, गार्लिक को थोड़ा हम पकने देंगे, मतलब थोड़ा मीडियम ब्राउन से होने देंगे। देन हम ऐड करेंगे अपने प्रॉन्स, मैरिनेटेड प्रॉन्स। यहाँ गार्लिक हमारा थोड़ा मीडियम ब्राउन हो चुका है। अब हम अपनी मैरिनेशन ऐड करते हैं। प्रॉन्स को कुक होने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। और ये सबसे हेल्दी मील है फॉर दोज हु आर ऑन कीटो। तो और फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं इसमें बेसिल डाल दूँगी। आप चाहे पास्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फॉर वेजिटेबल ब्राउन फ्राइड राइस यहाँ पे मैंने लिया है अनियंस, कैप्सिकम, कैरेट, कुक्ड ब्राउन राइस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूँगी अपनी वेजीज। आपके पास घर में जो वेजीज अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, and black pepper. Now I'm going to mix it. हम इसमें अपनी सॉसेज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लिया है ½ टीस्पून ऑफ विनेगर, 1 teaspoon soy sauce,
1 teaspoon of red chili sauce. Now I'm going to mix it. The brown rice add करूँगी. अच्छे से mix करूँगी. और ये हो चुका है रेडी.